Hi, sir. How are you? Hi, I'm absolutely fine. What about you? Good as well, sir. Thank you. What is the generally the language preference? It's mix or pure Hindi or English or mix of both? Mix of both, sir. English and Hindi. Okay. Yeah. And usually it's like half an hour something. Like you give your presentation and your thoughts, and then maybe you open the mic to people that if they have any queries or something. Okay.
Hi Anshul ji, Jai Jain. Hi, Jain. Can we wait for 2 more minutes? Then we can start. Yeah. Yeah. Yes, I think 2 more minutes. Yeah. It's close to Sunday evening, so Yeah. So we can start with introduction. Maybe Amol, you can start introducing yourself, followed by Kamalji and Aniket. yeah. Yeah. So Anshul ji, I'm based out of Pune. Joining in from Pune, I work with HCL, and there I'm responsible for building their customer experience business within the energy and utilities vertical. And one reason why this topic is very important is because today I'm dealing with a mindset, right? Very often companies don't really grow because of the mindset, not because they don't have enough firepower. And I think, this topic has come to table at a very right time where I am. I very recently joined, and my assessment of the company was that they've done enough. It is just that the mindset to grow somewhere uh, has not, it's slightly not there. So I'm very excited to hear your thoughts today. Yeah. In fact, the cultural issues and the mindset issues which you are talking about, it's the biggest problem. In fact, I am the part of various, acquisitions, deals, and all in my professional career. And when people ask me that, what is the biggest challenge which you faced while, in those acquisitions, whether it is legal, whether it is compliance, whether it is any other things, I always say it's a cultural issues to match the two different mindset people, or to match the two different organization into single. It's biggest challenge actually. So yes. Good. Making them believe that what we are out there for is actually possible. So I don't know whether my thought process, whatever I'm going to share, whether it will help you or not, but let us see. Something to learn. Ankit or Kamal, do you want to go next, please? Jayendra's, all of you, thank you very much for inviting this program. I think so it is required day to day activity database. The AI is very important for our lifestyle nowadays. I think so. It is. I think so. Manufacturing unit turnover to service into now it is AI. So that's why I'm. Yeah, Kamalji, let me clarify that this topic AI, which I am going to talk about, it's not the artificial intelligence, it's artificial impossibilities. So it's a completely different altogether, nothing to do with technology. So I mentioned few days back to Rishmi also that that there are certain questions which I have received actually. So it is not related to that topic, but anyway. That is mindset. So I'm yeah. happy to say that my mindset is quite means not clear. No, So that's why I like no quoting all problem. that. No problem. Right. So thank you very much, sir. So we have one more participant just joined. She's Swati, right? Yeah. Swati from Gurgaon. Yes. Okay, great. Swati ji, would you like to introduce yourself? Yeah, sure. So, can you hear me? Yeah. Yes, we can. Thank you. So, as you mentioned, I'm Swati Jain from Gurgaon, and I run a non-profit Karyashala Foundation. So, we are into women empowerment through skill development. So, the topic which you are taking today was very interesting. So, I thought to join it and see what we can do it in our life and others' life, how we can bring changes. And apart from that, I also run a women community on Facebook, Women.
in which there are nearly 70,000 females. So that's a little bit about me. Okay. Would you like to introduce yourself? Rahul, would you like to introduce yourself? Well, if you're speaking, you may be on mute. Yeah. I think there was one more person, Ankit. Ankit, if not Rahul, Ankit, do you want to go next and introduce yourself? Or maybe we can start the session. Okay, if no problem. fine, So, Praveen. yeah, so right. So if my database is correct, so Rahul is from Bangalore and he's from Kotak group, and Ankit is from I don't know which group, but he's from Bangalore. So anyway, so I'm Anshul Jain. I'm working as a presently as a chief compliance officer and heading the legal and the corporate secretarial function of KFin Technologies Limited. Uh, uh, of course, in the part of various things and author of couple of books on the corporate law and all. But anyway, so but this topic is something not related to the academics at all. It's based on the couple of theories to which I worked a lot, and one of them is published, and one is yet to be published. So so this is AI theory and the PI theory. So there are two theories, I call it. So this is the AI, which AI is more the story driven, and PI is actually where we do the experiment on the human minds. So and it's a specifically when we'll talk, I'll talk a little bit of PI later on. So the PI theory is actually help a lot to bring out the good productivity as far as our day-to-day working, official working is concerned. And AI is basically is more to do with listening of the some of the greatest stories, and try to understand that uh, that what happen in somebody's life when the people say something that it cannot happen. So sometimes we say हम कई बार ऐसा बात करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, so but actually कुछ लोगों ने उसको करके दिखाया कि वो हो सकता है, और जैसे ही कोई पहला पर्सन उसको कर लेता है, उसके बाद उसको फॉलो करने वालों की लाइन से लग जाती है, मींस so AI is basically talk about this thing only, that all those blockage जो हमने मेंटल ब्लॉकेज बना के रखा हुआ था कि ये काम नहीं हो सकता है, एक्चुअली वो आर्टिफिशियल था, वो नेचुरल नहीं था। और जैसे ही किसी एक पर्सन ने उस मेंटल ब्लॉकेज को एंड किया, उसको उसके फॉलोअर्स उसके काफी सारे फॉलोअर्स सामने आ जाते हैं। सो सो ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जिसमें कि लोगों को ये बोला गया था कि ये तो काम कभी हो ही नहीं सकता है, बट लोगों ने उसको करके दिखाया। So I'll show you one picture, and I'm sure you might be knowing. Can you tell me who is this story? Who is this lady actually? I can't tell the name, but it seems like she would have climbed the summit. Okay. And maybe So more Is she one who like got paralyzed and right, after that exactly. also she climbed the Mount Exactly. Everest without her legs, Right, paralyzed right. leg? Exactly. So she is Arunima Sinha. So इसका स्टोरी है ना बड़ा यूनिक है, and personally I'm very much inspired by this particular lady. She was national volleyball player and about to get selected for the international level in the volleyball from India. Now what has happened with this lady?
In 2011, when she was traveling from in a train, so there were some unsocial element entered into the train, and they start looting the people, and so she protested, and उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि इसको उन अनसोशल एलिमेंट्स ने रनिंग ट्रेन से बाहर फेंक दिया, राइट? एंड she was lying on the railway track, means just besides railway track, and whole night she was there because there was a dark and no one was there, so nobody could see her, so she was lying there. मॉर्निंग में कुछ विलेजर्स वहां से पास हो रहे थे, तो दे कुछ विलेजर्स वहां से पास हो रहे थे, तो सडनली इसको देखा कि कोई लेडी ट्रैक के पास पड़ा हुआ है और इसका जो पैर है वो बैडली डैमेज था, एंड इसके पैरों के चारों तरफ वो छोटी छोटी एंड्स होती हैं, वो पूरी इसके पैरों को खा रही थी। ना आप इमेजिन करिए कि कितने पेन में होगी, क्या होगी। इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट जस्ट सोचिए कि वो कितना पेन में होगी। और उसको जब वो विलेजर्स नियर बाय हॉस्पिटल लेके गए, उस गांव में कुछ ऐसा मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, बट जो भी अवेलेबल था वहां लेके गए, तो वहां के डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि हम नहीं इसको हैंडल कर पाएंगे, तो इसको एक नियर बाय एक और कोई फैसिलिटी है वहां पे शिफ्ट किया गया। और वहां पर एक डॉक्टर था, उन्होंने इसको देखा और बोला कि आफ्टर डूइंग ऑल दिस क्लीनिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल, कि इसकी बॉडी में अगर इसके पैर को कट नहीं किया गया तो इसकी बॉडी में पॉइजन हो जाएगा एंड शी विल डाई। नाउ इमेजिन सिंगल लेडी, वॉलीबॉल प्लेयर, कोई फैमिली मेंबर्स आसपास नहीं है, वो खुद ही डिसीजन मेकर है उस दैट पॉइंट ऑफ टाइम पर, और डिसीजन क्या लेना है कि तुम्हारा पैर काटना है या नहीं काटना है। आप उस माइंडसेट को इमेजिन करिए एक बार को, कि कैसे, किस तरीके का माइंडसेट उस टाइम उसके ऊपर उसके साथ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, अगर उसका पैर काट दिया एंड एट द एज ऑफ 21, अगर उसका पैर काट दिया तो उसके करियर का क्या होगा। एंड सो दुनिया भर के क्वेश्चन नेचुरली उसके दिमाग में चल रहे होंगे, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, शी टेल डॉक्टर कि ये मेरी लाइफ के लिए अगर नेसेसिटी है, मेरे जिंदा रहने के लिए नेसेसिटी है, तो मेरा लेग को कट कर दीजिए। नाउ देयर वाज अ ट्विस्ट ये था कि वहां पर कोई एनेस्थीसिया देने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं था। सो अब नियर बाय प्लेस आई थिंक बरेली था, वहां से, तो वहां से अगर किसी एनेस्थीसिया को बुलाया जाता है या इसको वहां पे शिफ्ट किया जाता, तो इट वुड हैव टेकन सम टाइम एंड उसका जान जा सकता था। तो इसने बोला कि डोंट वरी, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा लेग कट कर दीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट डॉक्टर सेड कि जो भी था कि ये इसका परमिशन नहीं होता है ऐसे करने का। तो बोले कि ठीक है, परमिशन नहीं होता है, बट पेशेंट को मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, वो दैट लेडी वाज टॉकिंग in all this thing, and finally the decision was taken and her leg was cut, and अभी भी घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता है, कहीं किसी को कुछ नहीं पता है। and finally of course after after that incident she reached back home, so there was a chaos in the entire family, and किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करेगी, अब आगे कैसे अपनी लाइफ को जिएगी, करेगी। Now, one fine day, she told her father that I want to go to Mount Everest. Now, अब अगेन माइंडसेट की बात करें तो अब उसके फादर का क्या माइंडसेट रहा होगा, सोच कर भी सुनकर भी कि ये क्या क्या बात कर रही है, इसका पैर नहीं है और इसको माउंट एवरेस्ट जाना है और ये करना है। एंड सडनली बट द फादर सडनली सेड यस, जो भी तुम्हारे वहां जाने के लिए नेसेसिटी है, वी विल डू ऑल दोस थिंग्स एंड विल गो, you will go there. So of course she got a lot of motivation and energy, no doubt. And after that she met बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया की फर्स्ट लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। एंड वो बछेंद्री पाल के पास गई मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि मैडम मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है। बछेंद्री पाल ने उनको देखा, उनकी स्टोरी को जब सुना,
तो बछेंद्री पाल ने अरुणिमा को बोला कि अरुणिमा अभी तो तुम ऑलरेडी वहां पर हो, तुम माउंट एवरेस्ट पर हो, अभी तो तुम्हें सिर्फ फिजिकली दुनिया को दिखाने के लिए जाना है कि यस माउंट एवरेस्ट पे तुम गई हो, अदरवाइज तुम ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हो. And she underwent some kind of training with Vachendri Pal and other people, and the day came when she started her journey towards Mount Everest. Now उसके बाद भी ये मतलब ट्विस्ट उसकी लाइफ के खत्म नहीं होते हैं. And so when you go towards Mount Everest side, so there was one person who accompany you in, especially in Nepal, that typically known as Sherpas and all. So she was going along with one Sherpa, and when the Mount Everest was about to, she was about to reach to Mount Everest, means just 20 minutes away. Sherpa said, madam हमको वापस जाना पड़ेगा. तो वो बोली क्यों? बोले हमारे पास ऑक्सीजन कम है, एंड बिकॉज ऑफ योर स्पीड वी हैव estimation of oxygen was wrong, and so therefore if we go there and come back, by the time we may lose a lot of oxygen, and we will not be able to go back. So she said ki perhaps this is first and last chance for me. I don't want to risk your life. You please go back, but I will go there. And 3-4 मिनट शेरपा ने उसको काफी समझाया, बट वो 3-4 मिनट में भी क्या ऑक्सीजन लूज खत्म हो रहा था. तो बट शेरपा ने फिर फर्दर डिस्कशन नहीं करके उनको बोला चलो अब चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा. एंड बोथ ऑफ देम गो टू द रीच देयर. She was there hardly for few minutes. Few minutes means not even 5 minutes. She was there on Mount Everest because of this oxygen issue, and she started coming back. After having a couple of photographs, she started coming back. When she was coming back, so जब वापस 20-30 मिनट का उन्होंने डिस्टेंस चल लिया, तो she found there was one British mountaineer who was coming, and he was going towards Mount Everest. So and then suddenly that British mountaineer turned back. तो उसने पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? तो बोलता है कि नहीं, I can't climb now. That British mountaineer told, I can't climb now. So she said that but it is too near. यहाँ से सिर्फ 20 मिनट का ही डिस्टेंस है और तुम 20 मिनट का डिस्टेंस छोड़कर वापस जा रहे हो. बोले नो, आई कांट क्लाइम. एंड शी वाज इंसिस्टिंग, और इधर शेरपा चिल्ला रहा था, मैडम जल्दी चलिए, हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है. सो बट शी वाज ट्राइंग टू मोटिवेट दैट पर्सन. Finally that person has decided that I am not going. So she asked her, do you have extra oxygen? So that British mountaineer was carrying some extra oxygen, and he gave some oxygen to her, and finally she came back. And उसके बाद she decided that she is not only of course Mount Everest was she already reached to the Mount Everest. Then she finally decided that I will go to the all peakest point of all the continents. So she went to this Kilimanjaro, Mount Elbrus in Russia, then in Australia, then in South America, and Denali in North America. And so everywhere she, till this time, she has completed all those journeys, whatever she saw. And she was one of the youngest recipient of the Padma Shri award. In the age of 24-25, she got the Padma Shri award also. Now looking or following at her story, something is very clear, that everything is of our mindset actually. So this is a prime example of AI, that people says that how can somebody without leg reach to the Mount Everest? And अगर कोई बचपन से ऐसा हो जिसका कोई पैर नहीं है और वो माउंट एवरेस्ट जाने की बात करे, तो मुझे एक बार कुछ समझ भी आता है. बट द पर्सन हु इज ऑल फिट एंड फाइन, वन डे वन इंसिडेंस और उसका लेग कट हो जाता है. और वो पर्सन भी कौन? अगेन वो पर्सन भी कौन? जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है. और जिस सर्कमस्टेंस में उसका पैर कटा, उस आई थिंक उस सब चीजों के बाद भी अपने माइंड को पूरा कंट्रोल में रखकर, पूरा कंट्रोल माइंड को पूरा कंट्रोल में रखकर अपनी लाइफ से को आगे बढ़ाना, दैट इज अ प्राइम एग्जाम्पल
where the so many people must be there in her life जिन्होंने उसको बोला होगा ये तो पागल हो गई है, कैसे ऊपर जाएगी, क्या करेगी, कैसे वापस आएगी, सब उसके लिए बहुत लोगों ने नेगेटिव भी बोला होगा. बट इन स्पाइट ऑफ दैट शी वॉज वेरी क्लियर इन हर लाइफ दैट मुझे क्या करना है, और एक बार उसने वो अचीव कर लिया तो उसके बहुत सारे फॉलोअर बन गए आगे चल के. So this is what the story of Arunima, and all about the mindset and artificial impossibilities, where the people said that it can't happen, but she could do it, and she is just 30-year-old at this particular point of time. So this is what happened. There is a theory in those who follow sports. तो एक थ्योरी चला करती थी पहले, या किसी ने ओलंपिक्स वगैरह को फॉलो किया हो तो एक उसमें 100 मीटर्स बैरियर करके एक थ्योरी था. ऑफ कोर्स वो थ्योरी बहुत 10 सेकंड बैरियर, नॉट 100, इट्स 100 मीटर बैरियर, इट्स अ 10 सेकंड बैरियर थ्योरी. सो व्हाट वाज दैट 10 सेकंड बैरियर थ्योरी? कि ये बोला जाता था कि जो ओलंपिक में दौड़ होती ना 100 मीटर्स की, और ये तो बोलते थे कि ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो 10 सेकंड से कम में 100 मीटर को दौड़ ले. So this is called 10 second barrier. It was a completely and 10 second barrier theory. And if I consider कि वो 100 मीटर की रेस कब से स्टार्ट हुई, तो if I'll consider say 1896 when the first Olympic has happened, तब से स्टार्ट हुई. अगर मैं वो मान भी लूं, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कब से स्टार्ट हुई, बट अगर मैं 1896 को एक बेंचमार्क मान लूं, सो 1968 तक मींस क्लोज टू 72 इयर्स तक, 1968 या क्लोज टू 72 इयर्स तक एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने कि 10 सेकेंड्स में 100 मीटर को, तो ये मान लिया गया था, मींस इट वाज अ माइंडसेट ऑफ द पीपल, ये मान लिया गया था कि दिस 10 सेकंड बैरियर कैन नॉट बी ब्रीच्ड. सो देयर वाज अ एथलीट कॉल्ड जिम हाइंस. वो जिम हाइंस ने सबसे पहली बार 9.99 सेकंड में 100 मीटर को कंप्लीट किया था. So he was the first person who breached that 10 second barrier. तो again mindset, उसका जिम हाइंस का बोलना यह था नहीं ये अचीव हो सकता है, बाकी सब लोग बोलते थे ये कभी अचीव नहीं हो सकता, तो उसने सबसे पहले इसको ब्रीच किया. एंड 9.99 सेकंड मींस 10 सेकंड से 1 मिली सेकंड कम में he could achieve that, and he became the first person in the history. Now again people were saying it cannot happen. He did it. Once he did it, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों के दिमाग से वो निकल गया कि नहीं ये तो अचीवेबल है, मींस जो एक ब्लॉकेज बना रखा था, मेंटल ब्लॉकेज, कि ये तो हो ही नहीं सकता है, वो रिमूव हुआ ब्लॉकेज, और लोगों ने डिफरेंट टारगेट पे काम करना चालू कर दिया. नाउ 10 सेकंड हैज बिकम नाउ 9 सेकंड बैरियर एक्चुअली. एंड फाइनली in last 50 years there were 35 instances, more than 35 rather, instances where the athletes completed that 100 meter in less than 10 seconds. And with the record of Jamaicans Usain Bolt, who did it in 2009, he did it in 9.58 seconds. So now 9.5 is the world record. उससे अभी तक कम किसी ने नहीं किया. But yes, I'm sure in time to come somebody will come and breach that 9 second barrier also. So again, mindset versus and then the people said that it can't happen, and once it is happen, then there are a lot of followers. So so वो जो सबसे पहला करता है उसके काफी सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं. सो अगेन एज अ कॉर्पोरेट कल्चर, एंड हमारे यहाँ भी कई बार हम कई ट्रांजेक्शंस करते हैं तो यही दिमाग में आता है तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, बट पीपल डज इट, एंड वंस इट इज डन देन न्यू बेंचमार्क सेट हो जाता है. किसी साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिलता है ऑफिस में तो उस साल ज्यादा प्रेशर आता है कि इसको मेंटेन कैसे करना है रादर देन इससे अच्छा तो पिछले साल वेरी गुड मिला होता तो ज्यादा अच्छा था, आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, बट आउटस्टैंडिंग मिल गया तो अभी उसको रिटेन करना इज अ चैलेंज, राइट? सो I think many of you must be cricket followers. तो
वो कुछ याद है आपको कि फर्स्ट टाइम वनडे क्रिकेट में 400 रन कब बने थे? किसी को याद है? 12th of March 2006 when Australia played against South Africa in Johannesburg. So उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू बैट, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक पहले बैटिंग किया और उसने 50 ओवर में 434 रन बनाए थे. नाउ that was the first ever match in the around one day cricket started somewhere in 71-72 time, and again if you look at the history, 35 years ka one day cricket ka history, so no team could score 400 runs in 50 overs. And then I remember during 90s तो 300 का score बनाना it's considered as a dream, or 225 220 30 runs तो safest target हुआ करते थे, और ये कन्फर्म कि अब तो जीत ही जाएंगे. So people used to say कि वनडे में 400 रन तो impossible है. That was again a mindset. But what has happened on that day? Australia did it for the first time. It's not only 400 runs, it's 434 runs. Now what happened later on when and the people saying that कि अब तो 400 रन बन गए, तो 400 रन चेस करना, that's तो means बनना impossible था, चेस करना तो वो impossible से भी अगर कोई बड़ा वर्ड होता है तो वही था कि तो हो ही नहीं सकता है. But I think Graham Smith was the captain in South Africa. He was in the dressing room and he said to the team that I am not going to give you any lecture. I want to say one thing, that if they can do it, why we can't do it? It's a simple statement he made to the team. If they can do it, why can't we do it? And suddenly the entire team got energetic, and they said, yes, we will win. And what has happened? South Africa scored 438 runs and they won. So something which has not happened in the 35 years of the history of a game has happened twice in a same day, in a same match, right? और दो इम्पॉसिबिलिटी वहां पे ब्रीच हुई थी. पहली इम्पॉसिबिलिटी ब्रीच हुई थी कि 400 रन कोई भी स्कोर नहीं कर सकता है, एंड सेकंड इम्पॉसिबिलिटी ब्रीच हुई थी कि 400 रन कोई भी चेज नहीं कर सकता है, राइट? दोनों इम्पॉसिबिलिटी वहां पर ब्रीच हुई. और उसके बाद क्या हुआ? 2006 से अभी हम 2022 में हैं, सिर्फ 16 साल हुए हैं. तो समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड फॉर द 35 years हैज ऑलरेडी हैपेंड 22 times in last 16 years. मींस लास्ट 16 years में वनडे क्रिकेट में टीम्स ने 22 times 400 से ज्यादा का स्कोरिंग किया है. एंड फिर एक नया बेंचमार्क सेट हुआ, तो 500 तो बन ही नहीं सकता है अब. और 2 दिन पहले क्या हुआ? आज से 2 दिन पहले, today is 19th of June. What has happened on 17th or 16th of June? What has happened? England score 498 runs against Netherlands. So this is a new benchmark. अभी वो 500 भी बन ही जाता if they could have got 1 or 2 balls more. So this is a new benchmark which is set now. और वो भी अब मुझे तो नहीं लगता कि वो impossible है. वो हो ही जाएगा, किसी न किसी दिन हो ही जाएगा, और एक बार हो जाएगा तो वो बहुत बार होगा. तो so again, this is again an AI kind of a theory which says that something which is considered to be impossible, right? It was breached, and once it is breached, there are a lot of followers. So like I said, 22 times in last 16 years, the things have happened which has never happened in last 35 years. So पहला mindset है, पहला mindset अगर कोई change कर लेगा तो उसके बाद उसके काफी सारे follower आ जाएंगे. So this is another example of this AI. So there are a lot of example in this world we will find, and suitable examples related to our choice. So sometimes some people are for sports follower, some people are scientist follower, some people are somebody else follower. So since I am I too much follow about sports and I am too much fascinated with the sports personality, so I have a lot of examples of sports personality. But
nevertheless, I have about 74, 75 different examples of AI over a period of time, what people have done in the modern generation. Right. So that I can share separately. Now, there is another theory which I mentioned in that in the brochure which was circulated about the Sangat ka asar actually. So again, in our corporate life, who is our, colleagues and with whom we spend our time and or not only the corporate life, even in our social life also, that sangat is very important actually. So with whom we are, with whom our kids are, or our family members are, who are our family friends, who are our friends, that makes a lot of difference in creation of our mindset. I'll give you again an sports example. Somewhere in 2006, okay, let me share again screen so you can let me ask you one question. These two people, one I'm sure you will be able to recognize very easily, but other one might be some difficulty. No idea? Okay, so one is this Michael Clark from Australia, other one is Habibul Bashar from Bangladesh. Now, why these two people, why these two character I have displayed? So let me tell you one small story. In 2006, there was a test match going on. The test match started between Australia and Bangladesh. तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? आज से मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 16 साल पहले की. तो क्या आपके दिमाग में आएगा कौन जीतेगा ये टेस्ट मैच? Australia. Naturally, right? Everybody will consider के okay, Australia ये मैच जीतने वाला है. So day one of the match, Bangladesh started batting, and Bangladesh का जो day one का score था उस टेस्ट मैच का, you know what was the score? The Bangladesh का जो उस दिन score था, that was about day one पे they've scored about 300 plus runs in for the loss of 4 wickets. Now, nobody in the no cricket follower, even Bangladesh, people were also surprised कि ये क्या हो गया, 300 रन कैसा बना लिया, वो भी डे वन पे, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के बॉलिंग अटैक पे, जो इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट बॉलिंग अटैक दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग शेन वॉन वाज आल्सो प्लेइंग इन दैट मैच. सो उनके सामने इन्होंने इतना रन कैसे स्कोर कर लिया? नाउ व्हाट हैज हैपेंड? अब डे वन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है? This is system, every day there is a press conference, and so usually captains जाते हैं press conference करने के लिए. तो बांग्लादेश से हबीबुल बशर आए, बट उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने माइकल क्लार्क को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल क्लार्क, Habibul Bashar, when he started, what was his statement? He himself has scored 74 runs on day one of the test match. So he said, like, we are in a good condition. Now we will see how we can save this test match from now. And when Michael Clark turn came, he said that though we could not perform well, but we will see how we can win from here. Now imagine, one player who is in the commanding position in the test match in any team, I am not talking about Bangladesh, any team who is scoring day one 300 plus run in a test match will get a better edge in test match cricket. But in spite of that, their own captain is saying that we will see how we can save this test match from here. You are in the so commanding position, how can you talk about saving of the test match? You should talk always of the winning of the test match. But the team who is on the other side, जो कमांडिंग पोजीशन में नहीं है, उसके बाद वो टीम का जो जूनियर प्लेयर है वो आकर बोलता है कि हम कैसे यहां से जीत सकते हैं, वी विल सी दैट. नाउ
now again, if you try to relate why I called why I've selected only these two player, because ये दोनों player ने अपना cricket career एक साथ start किया था, right? हबीबुल बशर ने भी और माइकल क्लार्क ने. Hardly there was a difference of a year or so in their cricketing career starting point. But अगर आप उन दोनों की अपब्रिंगिंग को नोटिस करेंगे तो माइकल क्लार्क की अपब्रिंगिंग किन किन के साथ में हुई है? Players like Ricky Ponting, player like Glenn McGrath, players like Shane Warne, player like Stuart McGill, who are legend of their time. उनकी अपब्रिंगिंग उसके सामने हुई है, और वो जो प्लेयर थे उनका माइंडसेट हमेशा विनिंग माइंडसेट था. तो इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ द डिफिकल्ट कंडीशन इन अ टेस्ट मैच, एक जूनियर प्लेयर जाकर विनिंग की बात करता है. और ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश ने हमेशा क्या देखा है? बस किसी भी तरीके से ये टेस्ट मैच को बचाना है, करना है, ये करना है. उन्होंने कभी विनिंग माइंडसेट नहीं रहा उनका. तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है सारे प्लेयर्स की, वो कैसे होती जा रही थी? वो होती जा रही थी बस हमको तो किसी तरह टेस्ट मैच बचाना है. सो ये आपकी संगत का असर है एक्चुअली. अगर आप विनिंग माइंडसेट वाले लोगों की संगत में रहोगे तो आपकी खुद की संगत भी कैसी बनेगी? विनिंग. आपकी माइंडसेट भी विनिंग माइंडसेट बनेगी. सो अगेन, सिलेक्शन ऑफ योर, सी सम ऑफ कोर्स आई से कलीग्स आर नॉट इन योर हैंड. आप जिस ऑफिस में जॉब करने जाते हो वहां पर आपके कलीग आपके हाथ में नहीं होते हैं. वो ऑलरेडी वहां पे पहले से जॉब कर रहे होते हैं, या आपके आने के बाद उनका जॉब सिलेक्शन होता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं. बट एटलीस्ट आपको जॉब के अलावा, जॉब तो साथ में करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई चॉइस नहीं है, बट जॉब के अलावा किसके साथ कितना रिलेशनशिप रखना है, कितनी संगत रखना है, वो आपको डिसाइड करना होगा, सो दैट आपका माइंडसेट जो है वो विनिंग माइंडसेट बने. सम कंपनीज आर वेरी सक्सेसफुल क्योंकि उनके लीडर का माइंडसेट हमेशा विनिंग माइंडसेट होता है. और सही कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास सब कुछ होता है, बट उसके बावजूद भी वो कंपनीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती, बिकॉज उनके लीडर का माइंडसेट वैसा नहीं होता है. वो हमेशा सेविंग, वो हबीबुल बशर माइंडसेट है, और अनदर वन इज द स्टुअर्ट क्लार्क माइंडसेट है. सो वो जो संगत है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट राइट पीपल इन योर लाइफ. समटाइम ऐसा होता है, वो डिफिकल्ट भी होता है, कई बार हमें कई लोगों को छोड़ना पड़ेगा हमारी लाइफ में, हम ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा. बट बिकॉज अगर हमारी संगत उनके साथ खराब हो रही है, या हमारी उनकी संगत में रहने के कारण हमारा माइंडसेट लूजिंग माइंडसेट बन रहा है, तो हमें उनको छोड़ना भी पड़ेगा. वो एक डिफिकल्ट चॉइस हो सकती है, बट दैट इज वेरी मच नेसेसिटी. सेम वे आवर किड्स, आवर parents, our everybody, this rule applies to everyone. So this sangat is very critical piece to you know follow. इसके अलावा समटाइम हमारे साथ एक और बड़ी यूनिक चीज होती है जब हम जॉब्स वगैरह करते हैं कॉर्पोरेट्स में, कि कई बार हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आते हैं करने को, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है, कोई पर्टिकुलर आईटी वाले लोग हैं तो कोई पर्टिकुलर कोडिंग हमें करनी है, या कोई पर्टिकुलर सोल्यूशंस हमें प्रोवाइड कराना है. तो what I observed in my corporate career, maximum people what they do actually, rather should I should not tell right now. Let me ask you a few questions actually, then I'll tell my point. जैसे हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आज की तारीख में भी हैं, पहले भी देखे हैं. तो सपोज करिए सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, ऐसे प्लेयर्स इंडिया क्रिकेट में हुए हैं. अगर उनको किसी टीम के अगेंस्ट में कोई भी मैच खेलना होता है, तो क्या वो मैच के पहले प्रैक्टिस करते थे? Yes. ओके. तो क्या उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये है कि करनी चाहिए. आंसर है यस, उनको करनी चाहिए. क्या वो प्रैक्टिस करते हैं? आंसर है यस, वो करते हैं. सिमिलरली, अब हम तो क्रिकेटर है नहीं, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है नहीं, हम तो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं. तो क्या हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए? इसका आंसर भी यस है, करनी तो चाहिए. बट क्या हम करते हैं? सो जो सेकंड यस है उनकी लाइफ का, वो हमारी लाइफ का नो होता है एक्चुअली. और ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मिलेगा, एक्सेप्शंस में भी देयर, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी, 90% प्लस केसेस में यू विल फाइंड कि हम
सिचुएशन को तब हैंडल करते हैं जब सिचुएशन सामने आती है। हम हमेशा लाइव एनवायरनमेंट में काम कर, हम आईटी वाले लोग होते हैं तो बोलते जरूर हैं कि हम यूएटी और अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। मैं तो टेक्निकल पर्सन हूं नहीं, बट सुनता रहता हूं। तो यूएटी में काम करना, लाइव एनवायरनमेंट में काम करना, बट हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कभी भी इन्विसाज करके वी नेवर डील विद द प्रॉब्लम, वी ऑलवेज डू द, हमेशा सिचुएशन जब सामने आएगी, लाइक मी अभी कोई सपोज करो, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्विजिशंस नाउ, मैं टिपिकल लीगल कंप्लायंस का पर्सन हूँ। कोई अगर कंपनी को मेरे को एक्वायर करने का कोई असाइनमेंट आया तो मैं क्या करूंगा, उसी सिचुएशन में उसी टाइम पे उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। और उसी सिचुएशन में जब हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो मालूम है वहीं से हमारी रियल प्रॉब्लम एक्चुअली चालू हो जाती है। समटाइम असाइनमेंट सबके कंप्लीट होते हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि असाइनमेंट किसी का कंप्लीट नहीं होता, सबके असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं, सबका सब कुछ होता है, किसी का कोई काम नहीं रुकता है, बट इट्स मोर ऑन द वे ऑफ डूइंग इट। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम सेम टू सेम असाइनमेंट आया ना तो मैं इसको ढंग से मैनेज करूंगा, बट नेक्स्ट टाइम वापस वही प्रॉब्लम चालू हो जाती है, बिकॉज हम हमेशा लाइव सिचुएशन को हैंडल करते हैं। so whenever trainees who joins under me, तो मैं जब उनको पूछता हूँ कि तुमको लाइफ में क्या करने का है, सो दे ऑलवेज से हमको ये करने का है, हमको वो भी करने का है, ऐसा भी करने का है, वैसा भी करने का, दुनिया भर की चीजें मेरे को वो बता देते हैं। so I always tell them one thing, that mock transaction करो, mock situations पे डील करो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ओके तुम्हें दो कंपनीज का मर्जर करना है, ऑफ कोर्स इन आवर फील्ड पीपल लाइक कि कुछ बड़े असाइनमेंट करना है तो चलो मर्जर करना है, एक बड़ा असाइनमेंट है, दो कंपनीज का अमलगमेशन करना है, डी मर्जर करना है, सो ठीक है। सो आई सेड कि अब रियल लाइफ में तो मैं मेरे मैनेजमेंट को बोल नहीं सकता कि ये दो कंपनीज को मर्ज कर दो, ऑफ कोर्स देर आर क्योंकि मेरे ट्रेनिंग्स को मेरे को सिखाना है तो आप मर्जर कर दो, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता मेरे मैनेजमेंट को। तो मैं मेरे ट्रेनिंग्स को बोलता हूँ कि हम दो कंपनीज का मोक मर्जर करते हैं, आई गिव देम द टू कंपनीज, आई कैन गिव देम एनी कंपनीज ऑफ माय चॉइस, एंड उनको बोलता हूँ दोनों कंपनीज का मर्जर करते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू कि that has given me tremendous results actually, क्योंकि when the real life scenario comes, my team is always geared up and always ready कि ओके ये वाला ट्रांजेक्शन करना है सर, इसमें ये जब हम इस ट्रांजेक्शन के साथ आगे आगे बढ़ेंगे तो दिस 10 प्रॉब्लम्स may come, so handling those 10 problem that point of time when it will come, rather to prepare ourselves right now only, when we are dealing with our project plan, at that point of time only we will factor all those problems, and we can very well find the solution, and that gives lot of comfort to our management also. I've done close to 100 mergers in my career, close to 50 acquisitions. In last 3 years alone I have done 34 acquisitions. So all the 34 acquisitions and all the mergers, I have never faced any kind of difficulties. The reason is that I always do mock transactions. Something new comes up, मुझे नहीं पता होता कि ये ट्रांजेक्शन में रियल लाइफ में जिंदगी में कभी करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं, बट बावजूद उसके आई ऑलवेज सिट विथ माय टीम। सैटरडे संडे के कई बार हमारे सैटरडेज के हमारे कई बार हम असाइनमेंट खुद को ही असाइनमेंट दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं कि ओके वी विल डू दिस इन दिस सैटरडे, एंड वी फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एरियाज ऑल्सो कि ओके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा, वहां पर ये प्रॉब्लम आएगा। और नॉट ओनली दिस, our dependencies on the other teams. So in an organization there are various teams, sometime finance team होगा, कहीं IT team होगा, sales team होगा, legal team होगा। तो इन हमारी टीम की दूसरी टीम्स के साथ डिपेंडेंसी क्या है कि हम कहाँ पर आके स्टक होते हैं। जब हम मॉक ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें पता चला अभी यहाँ पे हम स्टक हो गए। क्यों स्टक हो गए? क्योंकि ये डेटा हमारे पास नहीं है। डेटा कहाँ से मिलेगा? ये डेटा फाइनेंस से मिलेगा। So now on the very day one of our project plan, we know that we got the we are aware that this is the problem which may face, and we have the dependency on finance on this. So that helps us a lot in while doing the mock transaction. And this is exactly I've learned from the sports people, that the second yes of their life become no of our life. So why not to convert that
no into yes, and I'm sure that 100% हम नहीं कर सकते हैं, but at least 50% भी कर सकते हैं. तो it will be very, very helpful for us in executing the transaction, at least for our side. I'm not you may still face some kind of challenges in handling because other teams are not doing mock, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, but at least from your perspective you can be very, very clear that what kind of problems you may face while dealing with the transactions. और live environment और mock environment में सबसे एक और चीज होती है कि live में risk बहुत होता है, especially the department in which I sit. It's a highly risky, there is a reputation risk involved, there is a legal risk involved, there is a compliance risk involved, there is a monetary penalty fine risk involved. So but mock में वो सब risk भी नहीं होता है, but वो आपको learning बहुत दे देता है. So that's another learning which I've learned from the sports person, to make their second yes in our yes also, in our life yes also. So that is one of the important lesson which is there in the sports person life. Last piece which I would the one theory, one particular, you must have heard in your childhood. Let me share again my screen. You must have heard this particular Sanskrit shlok in your childhood, in your school somewhere. Kagachesta bakodhyanam swan nindra tathev cha alpahari grahatyage vidyarthinam panchalakshanam. So if we look at this particular shlok, what it talks about kagachestam. Kak means what? You know, kak क्या होता है? Crow, yes. So और चेष्टा मतलब इच्छा, डिजायर. तो हमने एक स्टोरी सुनी है ना, वो क्रो को पानी पीना होता है तो वो पानी का लेवल बहुत डाउन नीचे होता है, तो वो पी नहीं पा रहा होता है, तो वो जगह जगह वो जाता है, एक पेबल उठा के लाता है, मटके में डालता है, फिर जाता है, फिर पेबल उठा के लाता है, फिर मटके में डालता है, तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है. उसके बाद तो आप सोचिए कि एक पानी को पीने के लिए उसने कितने, उसकी डिजायर, उसने अंदर से उसकी डिजायर को कितना आग लगाया होगा, तब उसकी इतनी अच्छी डिजायर बनी और उसने वो काम किया. तो कागचेष्टम मीन्स कौवे जैसी इच्छा रखना. Kagachestam, put effort like a crow. So that is what the meaning of that kagachestam. We have to put effort like a crow in all our transactions, in all our life. Next, it says the bakodhyanam. What do you mean of bakodhyanam? Bak means, पता है आपको क्या होता है? क्रेन, दैट बगुला, अगर आपने सुना हो, जो बगुला होता है पानी में खड़ा रहता है एक पैर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बगुला, क्रेन जिसको हम बोलते हैं. सो बगुले की एक बड़ी खासियत होती है, वो क्या है, एक पैर पे ऐसे खड़ा रहेगा और आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली रख के इधर उधर देखता रहेगा. उसके पैरों के आजू बाजू से बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस जाएंगी, सब कुछ जाएंगी, बट वो कभी भी है ना उनको हंट नहीं करेगा, कुछ भी परेशान नहीं करेगा, वो उसको चलते रहने देगा. और जैसे ही कोई बड़ी फिश आएगी वो छोटी फिश को खाने के लिए, तो वो सीधे बड़ी फिश को उठाएगा और खा लेगा, राइट. और वो बिल्कुल एक जैसा खड़ा रहता है, बिल्कुल हिलता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड बकोध्यानम, कि यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल लाइक ए क्रेन. That is the meaning of that bakodhyanam, that you have to focus on your goal like a crane. Then, and in fact, in one of my previous organization, मैं कई बार मेरे बॉसेस को पूछता था कि कई बार हम हमारी कंपनी के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज सुनते रहते हैं, कई लोग नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो माय बॉस ऑलवेज सेड दैट बकोध्यानम, you should focus on your goal, forget about people. One day these people will say ke you are right, or and you, because वो तो बोलते रहेंगे, उसके ऊपर ध्यान मत दो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. You focus on your goal like a crane. Third is swan nindra. Do you know what is swan? Swan का मतलब आपको पता है? It is dog, कुत्ता जिसको हम बोलते हैं, right? Yes, dog. और निंद्रा means sleep. तो what does it mean that swan and indra means, अगर आपने किसी डॉग को देखा होगा तो what it does कि वो रोड पे बैठा रहता है, सडनली कोई गाड़ी पास होती है तो वो एकदम इमीडिएटली उठता है और साइड में हो जाता है. वो सो रहा है, अभी तो आपको लगेगा ये तो सो रहा है, बट द मोमेंट यू विल
the vehicle will, near to that particular dog, suddenly उठेगा और side में चला जाएगा. So this is Swan and Indra means stay alert like a dog. This is the theory said that they stay alert like a dog. Then next आता है अल्पाहारी. Alpahari, alpa means come, and ahari means ahar means भोजन खाना. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कम खाओ. द अल्पाहारी का मतलब ये है कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, अलग अलग सेंसेस, लाइक हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, किसी को टच करते हैं. सो ऑल दिस आवर सेंसेस. सो what the meaning of alpahari here is always give right input to your senses. So when you are saying something, say good. When you are seeing something, see good. When you are hearing something, so give right input to your senses. So means आप कम करो पर जो भी करो अच्छा करो. This is the meaning of that alpahari. And the last one is grah tyagi. Grah tyagi means grah means ghar or tyagi means छोड़ना. So again, I am not telling you to leave your home, but the meaning of grah tyagi here means that leave your comfort zone. So हमको सबको बड़ा अच्छा लगता है हमारे comfort zone में रहने का. तो बट जब तक आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलेंगे, we will not be able to grow in our life. So many people having a lot of potential in their life, but they are in the wrong cities. तो बट उनको वो सिटी छोड़ना नहीं होता है because they are comfortable over there. और उसके चक्कर में वो अपना पूरे करियर भी खराब करते हैं, और जितना वो लाइफ में ग्रो हो सकते थे उतना ग्रो नहीं हो पाते हैं, और स्ट्रगल करते रहते हैं पूरे टाइम. सो एक कंफर्ट जोन को अगर छोड़ा होता तो वो शायद उनकी लाइफ कुछ डिफरेंट होती. सो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर हम लोग हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना पसंद नहीं करते. एंड वंस वी आर आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, तो हम हमारी लाइफ में काफी ग्रो कर सकते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट ग्रह त्यागी. राइट. सो कागचेष्टा बकोध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागे विद्यार्थिनम पंचलक्षणम. So it says that put efforts like a crow, focus on your goal like a crane, stay alert like a dog, always give right input to your senses and leave your comfort zone. And it ends with vidyarthinam panchalakshanam, means these are the 5 qualities of student. Vidyarthi means student, panch means 5, lakshan means quality. So vidyarthinam panchalakshanam. So it says these are the 5 qualities of a student. And who is a student? We all are students. Throughout our life we all are our students. So it says vidyarthinam panchalakshanam, means this particular 5 lessons, according to this Sanskrit shloka, anybody has to follow for throughout their life. So if you'll follow all this, you will be very, very successful in your career. And not only you, your kids, your family, everybody will be very, very successful with after following all this Panchalakshanan lesson. Right. So I think I'm done with whatever I was supposed to tell on AI, then Sangat ka asar, and the 5 qualities of students. So all these 3 I've covered. Now let me tell a little bit about this another theory which is yet to be of course this theory is partly, I would say, is it's yet to be published officially, but yes, I have experimented on few people how to increase our productivity actually. So sometime what happened that एक कोई दिन ऐसा होता है ना जिस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है और उस दिन हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिस दिन हमारी सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमारी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है या हम काम नहीं कर पाते. तो ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर माइंड भी वही है, इंसान भी वही है, सब कुछ वही है, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? तो this PI theory, actually, I may not be able to share too much of detail of this. Perhaps maybe after 6 months I can talk more on that. So this theory which we are trying to develop, whereby we try to find out the happiness index of each person in various circumstances. So for example, there are so it's a 2 months cycle actually. So day 1 to day 60 you need to
monitor various thing. वो होता है ना, जब हम कोई पेशेंट होता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हैं, उसका डायबिटीज मॉनिटर करते हैं, ये करते हैं. तो इसी तरीके से आपको आपकी लाइफ के वेरियस इवेंट्स को मॉनिटर करना है, ऑनेस्टली कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने. सो दोस क्वेश्चंस आर अबाउट 30 क्वेश्चंस पर डे, and whatever, and questions are person centric. It's not the questions which are generic. Few questions may be generic, applicable to all. Few questions which are person centric. Person centric means अमोल के लिए अलग हो सकते हैं, अंशुल जैन के लिए अलग हो सकते हैं, स्वाति जी के लिए अलग हो सकते हैं. डिपेंडिंग, वो 1-to-1 टॉक से वो क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं. And then they need to answer those questions. Honestly answer 60 days में. And then there is a graphics which is prepared, and we try to find out that at what moment the happiness indexes are highest level पे थे या high level पे थे. So there is a graph. So जहाँ पर वो up level पे थे, जहाँ पर वो down level पे थे. And why it is on down level and on why it is on up level? So there are circumstances. अगर हम उन circumstances को kill कर दें, so perhaps happiness index will always be on the higher side. So just to find out that what was the root cause, what was the root causes because of which my happiness index has gone down, that is the theory which is actually the PI theory which we are developing, whereby we try to find out the happiness index का low होने का reason, and वो रीजन को हम किल कर दे. हम उसको जीरो नहीं कर सकते, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वी कांट मेक इट जीरो, बट वी कैन किल टू ए ड्रास्टिक लेवल. मे बी एटलीस्ट उसको 70% तक हम डाउन कर सकते हैं. तो अगर मुझे पता है, आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. कुछ ऑफिसेज में हमने इसको टेस्ट किया, एंड हम कुछ लोगों से मिले. जब हमने से 20 लोग वहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं, and their boss came to us and बोलती टीम का परफॉर्मेंस इज नॉट गुड. सो हमने बोला दिस इज अ राइट ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेरिमेंट. लोग कम हैं और परफॉर्मेंस कर नहीं रहे हैं और बॉस इज अनहैप्पी, सो लेट अस डू द एक्सपेरिमेंट. वी took the consents and we did that experiment, and after 6 months we found that the performance is enhanced. और हमने उसमें बहुत छोटे छोटे माइनर मॉडिफिकेशन किए. हमने मॉडिफिकेशन किया कि when we found one employee जिसका एक आदत था कि उसको विंडो से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता था. तो उसके बॉस को पहले ये प्रॉब्लम थी कि ये विंडो के बाहर क्यों इतना ज्यादा देखता है, जब देखो जब थोड़ी देर में विंडो के पास चला जाता है, ये करता रहता है. हमने बोला उसका सिटिंग अरेंजमेंट ही विंडो के पास कर दो, बिकॉज उसका हैबिट है, उसका परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली हिज परफॉर्मेंस इज वेरी हाई, राइट. तो ऐसे अगर उसको मैं विंडो के पास उसका सिटिंग अरेंजमेंट कर दूंगा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर उसका सी अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट इज टू बी डन, उसका विंडोज से बाहर देखना प्रॉब्लमैटिक है या हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है हमारा ऑब्जेक्टिव है? एनहांस करना ऑब्जेक्टिव है, तो वो बाहर देखकर एनहांस कर रहा है तो करने दो ना. व्हाट इज द बिग डील इन दैट? सो सिमिलरली स्मॉल मॉडिफिकेशन, सम पीपल लाइक आई एम टेलिंग यू वेरी बहुत छोटा छोटा एक एक्सपेरिमेंट. वो जो अगर आपने the atomic habit करके there is a book which says that small modification in your life can create a big wonders. तो small modification, one person we found that, अब आपको थोड़ी absurd लगेगी मेरी बात, but I'm telling you these are the reality. He doesn't like black color, तो उसका जो कीबोर्ड था वो ब्लैक कलर का था, माउस था जो ब्लैक कलर का था, हमने उसको कन्वर्ट करके व्हाइट कलर का कर दिया. स्मॉल थिंग but helped a lot in improving the performance. So small things make modification, and when I'm talking about this modification, I'm talking about the entire 360 degree of the life. Means हमारा डे जब से स्टार्ट होता है और डे जब एंड होता है, उस पूरे 360 डिग्री में हम कहाँ का माइनर मॉडिफिकेशन करके अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को हाई कर सकते हैं, एंड जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स लो होता है उसको किल कर सकते हैं उन सर्कमस्टेंस को. सो डेफिनेटली हमारा परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है. So perhaps once this is fully aligned, this theory is fully aligned, fully tested, once we will have definitely a session on that on this platform. So with this, I think it's 6 o'clock also. With this, let me end the session for the day. And I'm sorry, especially Kamalji, I could not answer your queries on artificial intelligence actually, because it is nothing to do with intelligence, and I'm not the proper person of that field also.
It's more about the artificial impossibilities, and I was knowing that it is going to happen. It happens everywhere, so it is nothing new for me. Yes, Amol, you have raised the hand. Please, if you can. Anshulji, first of all, thank you so much. I want to be mindful of your time, and I just wanted to ask, do we have a few more minutes for questions from Yeah, you? please, if I can answer. I mean, I have a few questions, but I'll let others go first if they have any. I'll just take a short pause and then see if anybody wants to ask questions, or else I'll go first. Okay, so Anshulji, I'll take the liberty to ask the first question. In the first part of the conversation, we spoke about the the possibilities, right? How do you basically overcome that impossible mindset? And you gave extremely good sport examples. The question is, outside sport, right? Even in our regular world, right, corporate world, how do we build that mindset of overcoming these impossibilities every single day? Because we come across these situations every single day. We are faced with it every single day, whether it will be at a personal, professional, or whatever, in your relationships, wherever, right? You'll face that. My question is, how do you do that? And a sort of a question is about which I've been pondering for quite some time is, does sport really help, or competitive sport really help you build that mindset? So those are the two questions. So yes, I agree that everybody face this kind of situations on daily basis and all. But again, actually, so many things are interlinked with each other. So like I talk about Sangat ka asar also. So I'll tell you, my ex chairman, means my ex company's chairman. I was working with him very closely that point of time. So so I'll tell you one real life example. There was a flood in the factory, and something which has not happened in the 80 years of the history of that area. वहाँ पे कभी बारिश ही नहीं आता था, और वहाँ पे एक बार ऐसा बारिश आया है कि पूरा फैक्ट्री को शट करना पड़ा, and there was a lot of damage in the factory, and lot of dependency of Indian market was there on that particular factory. So it was it was to be recommissioned very fast. And when the engineers were called and उनसे पूछा गया कि ये कितने दिन में कमीशन होगा, तो उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया. And my company's chairman told my company's chairman father in fact told very categorically that it is to be done in 25 days. तो उसके लिए अभी जो करना है, जितना वर्कफोर्स लाना है, जितना मनी स्पेंड करना है, सब करो, बट हमें करना है, राइट? Now it was commissioned in 22 days, actually recommissioned in 22 days with world's best safety standards, right? So अगेन संगत का असर, इम्पॉसिबिलिटी, वो सब साथ में. तो आप सबसे पहले वही है कि आप कैसे लोगों के साथ काम करते हैं. अगर आपका, जैसे मैंने बोला, विनिंग माइंडसेट वाले लोगों के साथ काम करेंगे तो आपके हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली बी सॉर्टेड आउट. Secondly, to follow the various success stories, like I talked about Arunima. I said that it's not only the sports, there are other fields also which is of your liking. I can give you many stories like that, and follow them. There are few very good books which you can read and correct your various actions. Like one of the book I talked about the atomic habits. So atomic means atom, वो छोटा छोटा एटम जो होता है. तो वो यही बोलता है कि आप एटम जितना भी अगर अपनी हैबिट्स को करेक्ट करते चले जाओगे, अपनी रॉन्ग हैबिट्स को, और डेली अगर आप ये बोलोगे कि मैं डेली अपनी एक हैबिट को एटम जितना करेक्ट करूंगा, तो 365 डेज में आप 365 हैबिट्स करेक्ट कर लेंगे जो आपकी गलत होंगी. तो आप इमेजिन करिए कि आप 365 दिन में पहले जो पर्सन थे और 365 दिन बाद आप पर्सन होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रांसफॉर्म पर्सन बन जाएंगे. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एक्चुअली. So by doing these 2-3 things, and I will recommend for everyone to read at least that book, not if not others. And corporate life mein, as I said, another interlinked thing which I talked about is the mock. The more mock you will do, and mock के लिए एक बड़ा problem होता है. mock का सबसे बड़ा problem ये होता है कि वो बड़ा painful होता है, कि जब है ही नहीं situation तो करूं क्यों मैं, number 1. Number 2 कि
वो हमें हमारे रूटीन टाइम से अलग टाइम निकाल के करना पड़ता है, बिकॉज रूटीन में तो हम इतने बिजी हैं कि अभी मैं ऑफिस में ये तो नहीं बोल सकता मेरे बॉस को कि सर अभी तो मैं मॉक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ये काम मैं बाद में करके दूंगा, वो तो हो नहीं सकता। सो मुझे मेरे रूटीन से निकल के टाइम निकालना पड़ता है, एंड देन आई हैव टू डू दैट। तो all the things are interrelated. The more mock you will do, the more you will be successful in your real life. The more you will be in the good people company, the more winning mindset you will be having. And third, the more and the more winning mindset if you are having, then वो जो impossibilities जो आपके इसमें create हुई वो automatically possibilities में convert हो जाएगी, because आपके mindset winning mindset रहेगा, so automatically convert हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप बाकी दो चीजों पे एफर्ट करोगे, तीसरा चीज ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। मतलब मैं आई हैड अ क्वेश्चन ऑन हाउ डू यू प्रैक्टिस, तो जो आपने बोला ना कि यू नो वो मॉक कैसे करें, राइट, सो दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन। लेट कमल गो नेक्स्ट, आई थिंक ही हैज अ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर, काफी इंटेलिजेंट एंड काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा मुझे मेरे लिए। मेरा 2-3 क्वेश्चन ये है कि एक तो आपने बताया कि एक 365 डेज कुछ नया नया करते रहो, तो हाउ टू मोटिवेट आवर सेल्फ के कुछ स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाता है पर वो कंटिन्यूटी नहीं रहता है, तो वो कंटिन्यूटी रहने के लिए क्या करना है? वो प्रॉब्लम मेरा भी है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? I'll tell you. Anyway, and so the हाँ, आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं बताता अच्छा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपने बोला कि सिमिलर क्वेश्चन है, आपने जो हैप्पीनेस इंडेक्स, हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स, वो एवरी डे एवरी मोमेंट चेंज होता है, तो हाउ टू कीप कंटिन्यूइंग लाइक सेम, या एक स्टैंडर्ड रखे कि कभी 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 गुस्सा आता है तो इतना गुस्सा आता है, और कितना कभी खुशी होती है तो बहुत खुशी होती है, तो दैट शुड बी नॉट लाइक वो एक नेगेटिव साइड भी नहीं इतना नहीं होना चाहिए। सो दैट आई, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन के हाउ टू कीप द नॉर्मल या हाउ टू कीप द कंटिन्यूटी ऑफ द रूटीन। ओके, सो सबसे पहले क्या है ना कि वो कैसे रखें से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो क्यों हो रहा है। कैसे रखें वो तो बात का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो क्यों होता है हमारी लाइफ में, और वो क्यों होता है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और वही आइडेंटिफिकेशन के लिए ही दैट एक्सरसाइज व्हिच आई टोल्ड दैट इट इज अंडर सम काइंड ऑफ ट्रायल एट प्रेजेंट। एंड सो ये क्वेश्चन हमारे को भी कई बार आया है कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, तो उसको हम कैसे कंटिन्यू रखें। तो हमको सबसे पहले उसके रूट कॉज जानने की जरूरत है। वो कॉज और बड़े ह्यूमन सेंट्रिक कॉज है, मतलब आई एम टेलिंग यू एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट रीजन। मीन्स वो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि 2+2=4 होता है, तो वो थ्योरी आपके लिए अलग होगा, और जो आपके लिए कॉज होंगे, जो आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाले कॉज होंगे, हो सकता है वो अमोल के लिए या मेरे लिए या दीपक जी के लिए, हो सकता है वो सारे कॉज एनर्जी डिक्रीज करने वाले कॉज हों। तो वो हर इंडिविजुअल का पर्सनल सेंट्रिक होते हैं, वो बहुत सेंट्रिक होते हैं। इसलिए सबसे पहला है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए देयर इज एन एक्सरसाइज व्हिच इज टू बी डन फॉर अबाउट 60 डेज। ऑनेस्टली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बट अगेन सेकंड क्वेश्चन जो आपका रादर फर्स्ट क्वेश्चन था, जो उसी से लिंक्ड है कि अभी वो हम उसको कंटिन्यू कैसे मेंटेन कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मेरे साथ भी है। कई बार हम सोचते हैं कि एवरी ईयर न्यू ईयर का हमारा रेजोल्यूशन है कि वी विल टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, वी विल गो रनिंग फॉर इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, बट वो कभी हम कर नहीं पाते। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एवरीबडी फेस। बट अगेन बाय वो एक बार एक थ्योरी और है जो ह्यूमन साइकोलॉजी का थ्योरी है कि समथिंग यू डू फॉर द 21 डेज, तो वो आपका लाइफ टाइम हैबिट हो जाता है। तो बस वो एक बार, चाहे कैसे भी बेमन से या कुछ भी कैसे भी करके, वो एक बार बस चालू करना है 21 डेज के लिए, वो आपका हैबिट हो जाएगा। अगर आप सिंपल सा एक एक्सरसाइज कर लें कि आप सिर्फ एक छोटी सी हैबिट बना लें कि मैं बिफोर स्लीपिंग कोई भी एक अच्छी बुक का एक पेज
या 2 पेज पढ़ के ही सोने वाला हूँ। कितना देर लगेगा 2 पेज पढ़ने में? 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे को वो 2 सॉरी, एम आई ऑडिबल? ब्रेक हो नो, आपकी वॉइस का बीच बीच में ब्रेक हो रही थी। I think everybody is facing this problem, or I think because your screen also is stuck in between. Yeah, Kamal, maybe it was your end. Okay. Might be. Can you repeat one more time, if you don't mind? Yeah, so I don't know till what extent you have heard. So I was just saying that there is a theory which says that ki something you do for the 21 days continuously, it becomes your habit. It converts you in your habit. तो वो एक बार बस वो 21 दिन जो भी आप करना चाहते हो वो एक बार पेन लेके करना पड़ेगा। सिर्फ 21 डेज करना है, उसके बाद वो 22nd डेज से वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। माइंड माय वर्ड्स, वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। I think your screen is again stuck. I don't know. Yeah, so you're back now. So but secondly, मतलब आप कुछ एक कोई भी बुक, कोई भी अच्छी बुक को सिर्फ 2 पेजेस पर डे का हैबिट डाल लें, और वो हैबिट या तो आप मॉर्निंग में उठते ही पढ़ लें या आप जैसे सोने के पहले पढ़ लें। तो 365 डेज में आप 700 पेज का कोई बुक खत्म कर सकते हैं या 300 पेज का दो बुक खत्म कर सकते हैं। That will give you a lot of, or it will not take more than 5 minutes of your time actually. So वो एक बार हैबिट में आ जाएगा ना, एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर द जनरेशन इश्यूज। वो आपसे आएगा, आपसे आपके किड्स में जाएगा, फिर उनसे फॉरो आगे, तो वो पूरा जनरेशन इशू है एक्चुअली। तो वो आपकी नॉट ओनली यूर बट इट विल सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम, अदर्स के इश्यूज भी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। सो दैट इज वो एक बार आपको बस स्टार्ट लेने का है। वो 10 सेकंड बैरियर है ना, वो बैरियर को निकाल दो माइंड से एक बार। आपको जिम हाइंस बनना पड़ेगा। अच्छा, एंड वन मोर क्वेश्चन, आपने जो एक स्लाइड बताया था वो एक बार दिखाएंगे वापस, तो आई कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू आर परमिट। Right, I will show that. 5 qualities. Yeah, कागचेष्टं बकोद्यानं स्वाननिन्द्रा तथैव च, this one, अल्पाहारी गृहत्यागे विद्यार्थिनं पंचलक्षणम्. So you can, yeah. Okay. Thank you very much. Right. Yeah, and one more question, are you an author? Have you wrote the book any? Yeah, you are going to writing book. Basically, I have written author of 3 books at present, but Oh, all the great. 3 books are hardcore academic books, which will not going to help you a lot. It's on the corporate law side actually, but of course on this AI theory and PI theory. AI theory is more, I would say it's unofficially, I would say it's published only. It's more, we have not published in a structured manner so far. The PI we have not published so far, so of course we will be doing it again. 21 days का हैबिट मुझे भी बनाना है, एक बार सोच के माइंडसेट बना करके यस मुझे इसको पब्लिश करना है। so it is under plan, and yes, we'll execute it very soon. Can you tell me the which book you are author of the book? So hello. Yeah, I can hello. Yeah, Kamal, we heard the question. So there is a book called company Premier on Company Law. So it's about 7,000 page book, which was published first time in 2016, followed by in 2019, and the next edition we are presently working on. And the target is that by December we'll publish another edition of that book, the revised edition of the book. And similarly, we have written books on the limited liability partnership. So that was first time published in 2011, and every 3 years, 4 years, some or other edition is. So limited liability is not in plan in this year, but company law, yes, it is going to be published in this year. Great. Thank you very much, sir. Right. Thank you very much. So Rashmi, over to you. Rashmi? Yeah, I think she must be
traveling. All right, so we can close it, right? Thank you very much for joining, everyone. Actually, on behalf of everybody, and on behalf of the mentorship platform also, very thankful for your session today. I have taken about 2 pages of notes from the conversation, and also along with the examples that you have quoted, right? Those examples are extremely important for you to remind of situations. So thank you very much for that. Right. Thanks a lot. Thank you very much for your kind words. Okay. Thank you. Bye, everyone.